Assalamu alaikum aspirants, welcome to today's lecture on a highly significant topic for your CSS 2026 preparation, multi-level governance legislature. In this session we will explore how Pakistan governance system functions at multiple levels, federal, provincial and local, with a specific focus on the role of legislature. Understanding the structure, responsibilities and challenges of our legislative institutions is crucial not only for scoring well in the CSS exam but also for grasping how democratic accountability and policy making work in our country. So this lecture will equip you with conceptual clarity, real life examples and exam oriented insight. Along with this video, you will get PDF notes to revise in a Google Forms, quiz with MCQs to test your understanding. So get ready to dive into one of the most foundational yet often underexplored pillars of Pakistan democracy. So multi-level governance क्या है? सबसे पहले हम multi-level governance को जो है define करते हैं. Multi-level governance is a modern political concept where powers and responsibilities are distributed across different tiers like federal, provincial and local governments. So its primary objective is to ensure representation, transparency and accountability in decision making. For example, after the 18th Amendment, provinces gain more autonomy in areas like education, health and local governance. So this is a practical example of multi-level governance in action. Then legislative role की बात करें तो इसका रोल है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल. नेशनल लेजिस्लेटर bicameral structure. So Pakistan Parliament follows bicameral system, meaning legislation requires approval from two houses. This ensures more balanced and thoughtful lawmaking. So then the National Assembly represents the population. For instance, Punjab gets more seats due to its the larger population. So the Senate provides equal representations to all provinces, ensuring that smaller provinces like Balochistan are not sidelines. So constitutional references articles 50 to 88 Constitution of Pakistan 1973. National Assembly and the lower house. टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 336 हैं और इसमें से 266 जनरल सीट्स हैं, 60 वुमेन और 10 मिनॉरिटीज़. अगर हम बात करें टर्म लेंथ की तो 5 ईयर टर्म विद डायरेक्ट इलेक्शन थ्रू FPTP सिस्टम. देन अगर हम देखें की रोल्स को तो इनिशिएट एंड पासिस मनी एंड फाइनेंस बिल्स एंड elects the prime minister, holds the executive accountable via question hours, motions and standing committees. For example, the National Assembly has discussed and monitored key social welfare initiatives like the एहसास program. अगर हम देखें एलिजिबिलिटी को तो मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स है, मस्ट बी अ पाकिस्तान सिटीजन एंड फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. उसके बाद हम बात करते हैं सेनेट की, जो कि है अपर हाउस. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कंपोजिशन की, तो टोटल मेंबर्स जो हैं वो 100 हैं और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रॉम ईच प्रोविंस. 23 सीट्स हैं ईच एंड देन इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम फार्मर फाटा एंड इस्लामाबाद एंड इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबलीज. टर्म की अगर हम बात करें तो जो है वो 6 ईयर है, हाफ रिटायर एवरी 3 ईयर्स. और अगर हम बात करें इसके यानी की फंक्शंस की, रोल्स की, तो रिप्रेजेंट्स प्रोविंसेस इन द फेडरेशन, रिव्यूज लेजिस्लेशन फ्रॉम द नेशनल असेंबली एंड कैनॉट इनिशिएट और वोट ऑन मनी बिल्स, सर्व एज अ बैलेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन फेडरलिज्म. For example, the Senate played a vital role in strengthening the Council of Common Interest (CCI), particularly on national issues like water distribution. And the chairman of the Senate can act as president in their absence. उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजनल असेंबलीज की. सो प्रोविंस कवर्ड पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान. ईच हैज़ अ यूनिकैमरल मीन सिंगल हाउस लेजिस्लेचर. अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पंजाब असम्बली के पास जो है वो 371 मेंबर्स हैं, 371 सीट्स हैं. देन बलोचिस्तान जो असम्बली है तो इसमें 65 सीट्स हैं, इंक्लूड जनरल वुमेन एंड मिनॉरिटी रिजर्व सीट, और टर्म जो है वो 5 ईयर है. और की पावर्स अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव ऑन सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, agriculture, local governance, especially after the 18th Amendment, and approved the provisional budget, elect chief ministers, oversee provisional
departments, etc. For example, the Sindh Assembly independently formulated its education policy after 18 amendment. इसी तरह जो है वो सिंध के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सीट्स हैं, KPK के अंदर मुख्तलिफ जो है वो सीट्स हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फेडरल प्रोविजनल लेजिस्लेटिव डायनेमिक्स. So legislative coordination post 18 amendment scenario, provinces enjoy greater autonomy, Senate role in national unity has increased, and the Council of Common Interest CCI is a constitutional body that fosters cooperation. Challenges भी हैं like overlapping jurisdictions, lack of coordination between federal and provincial bodies, and political polarization hinders different legislation. For example, both federal and provincial governments legislate on education, which is sometimes creates confusion and conflict. इसके साथ हम देखते हैं चैलेंजेस को एंड रिफॉर्म्स को. तो अहम चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो जो कि पाकिस्तान के लेजिस्लेटिव गवर्नेंस में है, तो की इश्यूज़ हैं लो अटेंडेंस ऑफ असेंबली मेंबर्स and dominance of the executive over legislative process, and weak functioning of standing committees, and irregular and short parliamentary sessions, and over politicization and absence of national consensus. For example, some bills are passed hastily without proper debate or scrutiny, undermining legislative quality. तो इसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है लाइक स्ट्रेंथन कमेटी सिस्टम, रेगुलर सेशन एंड डिबेट्स, इन्हेंस्ड रिसर्च सपोर्ट, फेडरल प्रोविजनल अलाइनमेंट एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी जैसे जो रिफॉर्म्स हैं इनकी ज़रूरत है. एम्पावर स्टैंडिंग कमेटीज विद रिसर्च एंड oversight capacity, and ensure regular structured assembly sessions, provide pre-legislation research to support to members, enhance coordination between federal and provisional legislative bodies, increase transparency and public accessibility. For example, making all legislative proceedings, bills and voting records available on the National Assembly official website. अगर हम कुछ ग्लोबल मॉडल की बात करें लाइक इंडिया ऑफर्स रिसर्च एंड पॉलिसी सपोर्ट टू ईच MP, पाकिस्तान कैन अडॉप्ट सिमिलर पार्लियामेंट्री रिसर्च असिस्टेंस. So legislatures are the backbone of multi-level governance in Pakistan. The bicameral system ensures representation based on both population and provinces. Though structurally sound, performance challenges persist. So memorize relevant articles, for example 50 to 88, 70, 141 to 144, 153 to 155. Understand the role, election and functioning of each house, grasp the implications of the 18th amendment and the role of CCI, and use recent examples to reach your answers. Dear aspirants, as we conclude this lecture, always remember that the strength of any democracy lies in its legislative institutions. Pakistan multi-level governance framework with its bicameral parliament, provisional assemblies and inter-government mechanism is designed to ensure representation, equity and decentralization. However, for this system to function effectively, reforms are necessary to overcome inefficiencies and strengthen transparency, coordination and legislative performance. For your CSS exam, focus on understanding the structure, roles and constitutional basis of the legislature and be ready to analyze post-18 amendment changes, challenges and reforms. So don't forget to revise your notes, attempt the Google form MCQs and keep updating your concepts. You are not just preparing for an exam, you are preparing to lead, to reform and to serve, master the system, not just to clear CSS but to change the narrative. Stay committed, stay consistent, you have got this.